Hi guys, it's around 7:30. I'm sitting here at Nana Nani Park. I'm just having bhajiyas, kande bhajiyas, but they are finely chopped and they are round in shape. See, they are like this, like a spherical shape. Generally वो ऐसे होते हैं, बहुत काले काले होते हैं. This is nice. They chop it horizontally, or they taste totally of onion. Sorry, there's nobody at the park. I'm just sitting here eating these kandi bhajiyas. I'm just so concerned, ये जो हाउस वाइफ होते हैं ना, इनके बहुत ब्लैबर करते रहते हैं इन लोग. ये किसी some of them don't have a brain of their own, so they are like these flying monkeys to the opposite party. See, no offense to housewives. I'm not saying everybody is like this, but most of them are like this. यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो गए हैं. डोंट टेक ऑफेंस, डोंट टेक इट पर्सनली कि नहीं भाई शांति ऐसे बोलती है, अपने आप को समझती क्या है. नहीं, इट्स नॉट सो. बट आई हैव सीन दैट यूजुअल बिहेवियर. उनके अंदर वो जो बिहेवियर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है. आई एम नॉट सेइंग आई एम डेढ़ शानी, आई एम एक्टिंग स्मार्ट और समथिंग, बट क्या करें, उनकी वो लाइफ ही वैसी होती है ना, तो उन लोग वैसे हो जाते हैं. जैसे मेरे स्मॉल गार्डन में वो एक गुज्जू आंटी है, मुझसे बातें करती है. शी इज़ लॉन्गिंग फॉर कंपनी एंड फ्रेंडशिप. शी डजंट वांट टू इम्प्रूव हर ड्रेसिंग सेंस और हर टॉकिंग सेंस. शी डजंट वांट टू मिंगल विद पीपल. शी डजंट वांट टू स्पेंड. सो शी इज़ लाइक दिस स्टबर्न egoistic, donkey headed woman. So Daryl sir was telling, why don't you tell her to join the group? I said, see, I told her many times, I'll introduce you, they're all housewives, you will be happy with them. She doesn't put any efforts. I said, you have to go there at 7:30 because these people come at 6:30. They are there till 8 o'clock. They pick all their flowers और जो भी पड़ा हुआ है वो उठा लेते हैं, and they leave by 8:30. So morning time they are spending over here because it's green and nice and all that. So they come by like one of them comes at 6:30, 6:45, then another one comes at 7:30. So since they live nearby, I told her, you go from the shortcut, you will reach there in 5 minutes. And my pond park that small garden ki female na, she like a penguin when she walks because she's very fat. And sir told me that she's not motivated at all. Maybe her husband. I said, क्या husband को लेके बैठे हो? That man is in his shop, and she doesn't have her son is also not, he is in abroad, and ये भी उसकी बहू या बच्चा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. Only and she said she's not even living in joint family. These women don't want to put any effort. उनको हर चीज़ नाटक नकरा हो करता है. I told her many times, you're very fat. Don't wear such sarees, nylon, polyester के. तुम्हें rashes पड़ जाएंगे because when you're very fat, the doctor them because they generate a lot of body heat, right? मैंने सुनती है. मैंने बोला पतले कॉटन के कपड़े पहनिए आप. अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए. अगर आपको ग्रुप में भी जाना है तो पहले लेडीज़ आपको रियली लुक डाउन अपॉन करेंगे. आपको मैं फ्रेंड्स बना के दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखें ना. थोड़ा अपने आप पे थोड़ा खर्चा करना, थोड़ा सा फ्रेश दिखना. मैंने उसको बोला खा के आ जा, तू खाती नहीं है. देन व्हाट हैपेंस इज योर स्टमक इज ब्लोटिंग. In the sari it looks very big breast, big stomach, big ass. These ladies don't understand. I said, listen, and I told her and I explained to her. She listens to me. I said, don't do it for me, do it for yourself. Are you comfortable wearing that polyester nylon ki sarees? What is more better, wearing cotton ka kurta, which is more modest, which will hide all your curves? I even told her. ये सब दिखाई देता है, अच्छा नहीं होता है ये.
आई सेड मैंने छोटी बहन के तरह बात की, आपको बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे ये she's saying if she'll take interest. I said she has no interest, no motivation. And sir was saying her husband is not supporting her maybe, and in their culture. I said, sir, what are you talking? After 50, woman always is alone because husband is doing his own thing. The children have grown up doing their own thing. They don't even live in the same house. So what's the big deal? I said, this lady herself is not motivated. Why put everything on the husband? The culture is not. I said, this is 2025. She's living in Mumbai. She's not living in a village where the culture will not allow. I said, culture allow करता है, but इसको ही मतलब इसको ही इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई थिंक कंजूस भी हो सकते हैं, बिकॉज शी हैज़ टू स्पेंड ऑन हर सेल्फ और स्पेंड ऑन, एंड दे आर क्वाइट वेल टू डू, मतलब शॉप है उनकी. आई टोल्ड हर, लर्न टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ. नो नीड टू गो टू द पार्लर, बट ब्राइटन अप योर सेल्फ ना थोड़ा सा. सो सर्वर सिंह की एस्केप करने के लिए अपना फैमिली लाइफ, मे बी शी इज टेकिंग अ वॉक. I said possibly, but her day begins at 8:39. I said that's great. सुबह शुरू होती है 6:30 बजे से लेके, जब लोग वापस जाते हो आप चलने आते हो. क्या है मैं I said see I do my level best. I said I've just given up on this woman because she always comes and asks me कौन सा exercise, then I tell her the exercise and then she's acting strange. With such women I just leave them alone. बट यहाँ ये वाली नाना नानी दे आर एक्साइटेड, नहीं हम लोग अपने लिपस्टिक लगाएंगे, हम अच्छे कपड़े. मैंने बोला पार्क आप गार्डन में आते हो तो ये मत ऐसे क्लम्जी मत आओ. वन इज़ ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, ओके, शी इज़ ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, द वन whom I am इंटरेक्ट. द अदर वंस कुछ भी ऐसे दुपट्टा, कुछ भी टी शर्ट, कुछ भी. मैंने बोला कुछ भी नहीं पहन के आने का. हमारी सुबह वैसे शुरू हो जाती है ना, तो हमें फ्रेश होना चाहिए. नहा धो लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, बट हम लोग फ्रेश नहीं दिखते क्योंकि हम माइंड में भी फ्रेश नहीं है. आई से आई डोंट लीव माई हाउस विदाउट टेकिंग अ शावर, एंड बाय मिस्टेक इफ आई हैव नॉट टेकन अ शावर एंड गॉन, माई होल डे वॉज बैड. सो आई एम लाइक दिस क्रेजी पर्सन हु हैज़ टू टेक अ शावर in the morning, whatever time, before 7 o'clock. Generally I used to keep it before, I used to take at 5:30, but now what has happened that मुझे रात को नींद नहीं आती है. So then I wake up at around 6 o'clock, sometimes 6, 7, 5:30, and then my eyes are like shut. First thing I do is that I just rush, I have my glass of water and I rush to the bathroom to take a shower. Without shower I cannot function. And sometimes if I have to go for a meeting and if I have to do something new, again I will take a shower. So with me it's that way. That's how I'm so motivated. Today my chappal broke. I left this chappals and I went walking bare feet. It was raining, कीचड़ था. I didn't think कि नहीं मुझे, मैंने बोला यहाँ से यहाँ रिक्शा कैसे करूँगी, because I'm just halfway through the church. So how will I take a rickshaw? Doesn't make sense. I didn't go back home. मैंने वो I kept the chappals aside and I kept walking. I said that's the way I am. I'm not saying everybody should be doing that or is a hero or something, but that's the way I am. Did I like walking in bare feet? I did not think all that. I was inside the church bare feet, literally bare feet. Then मेरे बाजू के सोसाइटी के अंकल, देन ही सेड अच्छा शांति आप, ही वॉज इन अ रिक्शा, देन ही सेड चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ. एंड देयर वाज नोबडी इन नाना नानी पार्क, नोबडी. देन वन ऑफ देम जिनसे मैं बातें करती हूँ, शी सेड आप मुझे कॉल करती तो मैं आ जाती. मैंने बोला आज तो सारे लोग गायब थे, बारिश भी नहीं हो रही थी. बारिश सुबह सुबह हो रही थी, 7:30 बजे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी. आई सेड देयर वाज नोबडी इन द पार्क. I said rain or shine, I will go for my church visit and I will come to Nana Nani Park. I will come here and sit down because this is my routine. This gives me a lot of strength and motivation to function throughout the day. Today I had Nagori ki chai and bun maska. I had a vada pav and kande bhajia. That's it. $20. I was pretty simple once upon a time.
Love you guys. Keep watching. Where is Zeena? Where's Zeena? Thank you Shayesta. Thank you Meeta Sen. Thank you Nirmal Kumar. Thank you Sudhir. Who else? Did I miss out anybody's name? तो मुझे sorry. अभी कोई मेरा couple of them who are regulars. I want to say hello to them. Thank you so much. Okay. Take care. Bye.